that mastering a newspaper can give you an edge in the verbal ability section of any entrance test. Hi, my name is Brenda, and today in this session, we will understand how to master the art of reading a newspaper, that is, the what, why, and how of newspaper reading. Now, it's a well established fact that the moment you decide to prepare the verbal ability section of any entrance test, especially IPMAT entrance test, anybody who's concerned will tell you, will ask you to start reading, more specifically, newspapers. Ever wondered why? Well, most of these entrance tests, the verbal ability section of these entrance tests, they test your language skills through your reading skills, through the reading comprehension passages, grammar, and vocabulary, right? So, if at all you can read a newspaper well, you will be able to master or understand or ace all the three sections. So I guess that is the reason why reading a newspaper is so important. But then the other important question, a very critical question that arises is how much time should we devote to reading a newspaper? Or maybe what all should I cover while reading a newspaper? And which newspapers to choose from, right? Well, today we will take a look at all these important questions and try to get the answers to all of these questions that are concerning all of us. Now, first and foremost, we need to understand which newspapers to choose from, especially when we live in a digital world where we are surrounded by a plethora of information. So, choosing the right content will be of the essence. Now, uh, I will share some good recommendations with you, but we know that in the world of internet, in the age of internet, we have access to so many websites, we have access to so many sources that can give us such authentic and reliable information that one may feel lost, or maybe one may hop from one source to the other, trying to understand which source to choose from. So I believe sticking to some good, reliable, authentic newspapers will always give you an edge. So some recommendations are the Hindu, the Indian Express, the Economic Times, and the Guardian. Now, internet, I'd say, is a treasure that offers you so many things, so many gems. But then, if you keep hopping from one source to the other, probably you will end up gathering more sources and limited content when it should be the other way around. You should have less sources which offer you a lot of good content. So choose your sources wisely, choose some reliable, authentic newspapers wisely, stick to those, be consistent, read from those newspapers. So you won't feel confused and lost. So you'll know that these are my newspapers, these are the sources that I trust, and I will read these religiously. Now, one big reason why these newspapers are advisable, because they don't just offer, the national and international news, or entertainment news based on movies and sports, or they give you editorial or opinion or science based news on science, technology, and business. They offer you their Sunday specials in the form of profiles or their Sunday magazines, which offer information or insight on contemporary sources. Now, the other good newspapers, as already stated, The Guardian, The Economic Times, and The Indian Express, offer variety of information based on national, international news, and anything and everything that you can think of. Now, the reason new newspapers are always recommended over any other thing: one, they're easily accessible; two, these are curated and created by experts, and they offer you authentic content. So there is something that you can trust and learn from. Now, reading a newspaper is of the essence because of the stated reasons that these entrance tests will test your language skills on mainly your reading skills, right? Through the reading comprehension passages. So, when you start reading a newspaper, you automatically build your reading habits. And once you start reading well, once you start reading good content, your speed will automatically increase, which is very important when you from the entrance test perspective. So I guess read the newspaper religiously, read the newspapers
every day, and this area will be taken care of. So you will read well, you will develop good habits, and your speed will improve. Now, increased general knowledge, I guess, is a given. So when you read something on a daily basis, you would know what's happening in and around the world. So you're not just preparing for the entrance test, but for the personal interviews, if at all there are any that will follow after the entrance test. Now, reading a newspaper will automatically improve your vocabulary and your language skills. See, when you read newspapers, you will come across good words, and you will see them the way they are used contextually. So जितना आप contextually word को usage उसका देखते हो, आपको वो समझ में आता है. कंपेयर करो इसे. आप लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स उठा रहे हो और आपने उनको लर्न किया, मेमोराइज करा, रिटेन करने की कोशिश करी, निमोनिक्स लगाए, ये करा वो करा. कंपेयर करो इसे न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ. आपने वर्ड को कॉन्टेक्चुअली देखा, आपको समझ में आया कि उसका मीनिंग क्या है, आपने उसको सर्च किया, उसका मीनिंग लिखा, उसको कॉन्टेक्चुअली यूसेज उसका देखा, कितना इम्पैक्ट इस वर्ड का आपके ऊपर आएगा, एंड आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती चली जाएगी. नाउ अदर देन दैट, इट विल डेवलप योर एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स. नाउ सी, होता क्या है, न्यूज़पेपर में जनरली फ्रंट पेज न्यूज़ होती है, जिसके ऊपर बाद में एडिटर्स अपने ओपिनियन देते हैं. तो आपने पहले फ्रंट पेज न्यूज़ पढ़ी, बाद में आपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन उसके ऊपर पढ़ा. आपको फैक्ट पता है, आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पता है, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, गुड और बैड, रिलेटेड टू the topic in concern, and it will strengthen your decision making skills as well, isn't it? So, a lot of good things come your way if you start reading newspapers. So, reading habits से लेकर decision making तक, vocabulary building से लेकर knowledge enhancement तक, there are so many things that the newspaper reading activity will offer to you. So, it's an important thing to do. मतलब अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप जनरली भी एक अवेयर सिटीजन होना चाहते हो, तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ कम्स द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग को टाइम कितना दिया जाए. भाई, न्यूज़पेपर अपने आप में भंडार है नॉलेज का. तो कितना, क्या पूरा दिन, क्या 4 घंटे, क्या 3 घंटे, क्या 40 मिनट्स, क्या करना चाहिए? दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल क्वेश्चन दैट वी एज मेंटर्स आर आस्क्ड frequently by our students. So देखो, when you start reading a newspaper, things won't be easy for you. ना वो न्यूज़ आपके लिए नई होगी, ना वो राइटिंग स्टाइल आपके लिए नया होगा, ना वो चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके लिए नए होंगे. तो पूरा पूरा will be new, and you will spend a lot of time reading a newspaper, maybe just 1 or 2 articles only. तो शुरू में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप परसिस्टेंट रहोगे, अगर आप डिलीजेंट रहोगे, एंड आप इस एक्टिविटी को एक टास्क नहीं समझोगे, आप उसको एंजॉय करोगे, तो आप ग्रेजुअली ये टाइम आपका कम होता चला जाएगा. अच्छा, न्यूज़पेपर के साथ न्यूज़ आर्टिकल के साथ एंगेज करना भी ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट एंगेजिंग विद, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गिवन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बिहाइंड द आर्टिकल. तो ये जब आप करोगे, इनिशियली अग्रीड यू विल स्पेंड मोर टाइम, बट ग्रेजुअली ये टाइम कम होता चला जाएगा, एंड यू विल स्पेंड less time compared to the time that you might spend initially, and but you will see a difference in everything. So आपका perspective, आपका knowledge, आपका vocab, everything will develop. But in any case, spending at least 1 hour in a day on just reading the newspaper is important. Minimum itna to आपको करना ही चाहिए. And you should not read the entire newspaper. You should only focus on what matters. Now comes the important question: what matters? क्या important है? See, one, we need to prioritize what we read. तो फ्रंट पेज न्यूज़ किसी भी न्यूज़पेपर का आपको ऑफर करेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. So I guess we can choose what we think is more relevant. तो कोई भी न्यूज़ जो आपको लगता है बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, वो न्यूज़ उठाइए. फ्रंट पेज में जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़ दैट यू आर रीडिंग. तो ये न्यूज़ फ्रंट पेज पढ़ना ज़रूरी है. यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. Choose what you would want to read, select what you want to read, go ahead, read it.
अच्छा, आज की न्यूज़ कल का एडिटोरियल होता है। सो एज ऑलरेडी स्टेटेड, जो न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है, ज़्यादा जिस पे फोकस लोगों का हो जाता है, या जनरली वो बहुत रेलेवेंट होती है, द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर दे सी इट एज देयर ड्यूटी टू गिव देयर व्यूज ऑन द न्यूज़. सो आज फ्रंट पेज में है, 2 दिन के बाद यू गेट टू सी द एडिटर्स व्यूज ऑन दैट न्यूज़. सो इट्स स्ट्रिक्टली देयर ओपिनियन ऑन द गिवन न्यूज़. तो आपने फैक्चुअल पढ़ लिया, आपने एडिटर का ओपिनियन पढ़ लिया. अच्छा, कुछ न्यूज़पेपर सच एज द हिंदू विच इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल फीचर्स, उसमें ओपेड सेक्शन है जिसमें और जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में वो लोग भी अपना ओपिनियन देते हैं. तो यू गेट टू सी, यू नो द फैक्ट्स, यू सी द एडिटर्स व्यूज, यू सी द व्यूज ऑफ द अदर एक्सपर्ट्स. तो वो सब इन ऑल क्या करेगा आपको, क्योंकि सब पहले से पता है, आप उस न्यूज़ को, उस एडिटर की लैंग्वेज को, उसके पर्सपेक्टिव को या अदर एक्सपर्ट्स के पर्सपेक्टिव को कितना क्लैरिटी से समझ पाओगे, एंड आपका पर्सपेक्टिव कितना डेवलप होगा चीज़ों को लेकर. सो द एडिटोरियल एंड द ओपिनियन सेक्शन, ये तो मस्ट रीड होते हैं बिकॉज ये फोकस्ड होते हैं, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग होते हैं. नाउ, बिजनेस एंड इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, नॉट बिकॉज दे ऑफर updates on markets, policies, or global economic trends, but also because the kind of terminology that will be used will help you understand a lot of theme based passages. भाई हमारा फोकस एंट्रेंस टेस्ट है, थोड़ा तो फोकस रखना पड़ता है. Now, the Sunday supplement, which is offered by the Hindu, is an additional की फीचर जिसको पढ़ना चाहिए बिकॉज ये आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बहुत अच्छी इंसाइट देता है. सो यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन फ्रॉम द लेंस ऑफ सर्टन एक्सपर्ट पीपल. Acha, there are certain sections that we can avoid. For example, the sports section, or maybe the movie section, Hollywood, Bollywood section. Now, as far as the news, the sports section is concerned, there are certain things that we can do. One should do rather. So let's say आईपीएल चल रहा है या ओलंपिक्स चल रहे हैं, विच वी नो कि चलेंगे तो बहुत दिन तक चलने वाले हैं. तो मे बी जस्ट रीडिंग द हेडलाइंस विल गिव यू अब्रेस्ट, विल कीप यू अब्रेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, ऑफ द लेटेस्ट दैट्स हैपनिंग अराउंड अस. बट पूरी न्यूज़ आप पढ़ नहीं सकते, पढ़नी भी नहीं चाहिए. व्हेन द इवेंट इज ओवर, उसके बाद अगर आप सिर्फ उसके ऊपर जो आर्टिकल्स आएंगे जिसमें समरी होगी कि भाई कौन कौन से इवेंट्स हुए, किन टीम्स ने पार्ट लिया, टॉप पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था, पूरी इंफॉर्मेशन कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिवली आपको जब गिवन होगी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट. मे बी आपने हेडलाइंस तो पढ़ी हुई है, अब आपने उसका समरी पढ़ लिया, तो आई थिंक आपको पता भी रहेगा एंड आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे हमेशा फोकस कर पाओगे. You won't have to worry about reading everything that's there in the newspaper because I believe you won't have that kind of time to devote to reading a newspaper. All right. So I guess those are the sections to read or maybe to avoid while reading a newspaper. Now, in a nutshell, there are certain things to remember when you start reading a newspaper. First and foremost, maintain a dedicated notebook when you start reading. So you can highlight and underline the parts that you're reading. Always remember, the messier the newspaper means the harder you worked on a given article. Neat and clean newspaper means, I guess you're wise enough to understand what that means. So read karo, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ. इससे आपका डेवलपमेंट, आपके नॉलेज का, आपके रीडिंग स्पीड का, आपके अंडरस्टैंडिंग का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा. अच्छा, यहाँ पर आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे जो आप कॉन्टेक्चुअली यूसेज, जिसका आप कॉन्टेक्चुअल यूसेज देखोगे, इन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखो, इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करो. अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वर्ड्स रिपीट भी होते हैं न्यूज़पेपर में. सो व्हेन यू टेक अ लुक एट दीज वर्ड्स गेटिंग रिपीटेड, विल मोर ऑफन देन नॉट, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा इन वर्ड्स के ऊपर, एंड ट्रस्ट मी दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर वर्ड बैंक. इन वर्ड्स को लिखने के बाद इट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू कीप रिवाइजिंग दीज वर्ड्स, कीप यूजिंग देम इन सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़पेपर रीडिंग से हमें सीखनी चाहिए या अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, वो है समराइजिंग द आर्टिकल्स. सो चूज एनी वन आर्टिकल ऑफ योर चॉइस दैट यू रेड,
summarize it, and make sure that you show it to an expert who can tell you whether you've done it right or wrong. So I guess अगर ये सारी activities को हम ढंग से करेंगे तो we will be able to get maximum out of this single activity. So I guess on a final note, I would like to say that newspaper reading should not be considered a task. It should be considered an activity that you really engage in and really gain from. It should be an activity that you enjoy because trust me, reading a newspaper is a good habit that you can develop because it's not just news, it's knowledge, perspective, and the foundation of informed decisions. And also, today's headlines are tomorrow's opportunities. Read a newspaper, right, and stay ahead of the curve. Thank you.